ecosystem around electric vehicles has really been the most paradigm-shifting development last decade. Our government's target that 30% of new vehicles bought by 2030 need to be EVs. It is truly the biggest change in mass mobility this decade. We're early believers in the space. We invested in Yulu in Fund 2, Euler Motors in Fund 3, and in the first year itself of Fund 4, we have doubled down on this conviction. As you all know, our Delhi Satrap, Arpit, and Venkatesh have now taken charge of this space at Bloom, and will quickly take us through a glimpse of what they're seeing in the market. Like most other people, I'm guessing that everyone gets inspiration about electric space, electric vehicles by looking at Elon Musk and Tesla. Please raise your hand. No one has evoked Elon Musk right now, till so far, so I'm doing the job. We also started with that. But over the last 4 or 5 years, this space has been very, very fascinating. So fascinating that I can't sometimes sleep thinking about so many of the things that we discovered over a long period of time. One important thing that you have discovered is that the reason why a lot of the adoption has not happened in India is simply because the quality of vehicles available on the road was just simply not good enough. And now that has begun to change. We have a company, investment in a company called Euler Motors, which is changing it, and then so many other companies which are doing it. So while this is happening and the cost of adoption and cost of ownership has significantly come down, this is an important curve to remember, that the cost of ownership has crossed in many categories in India. At the same time, a lot of challenges continue to exist. And these challenges are very hard, the ecosystem-oriented challenges, which is why you don't see it happening as fast as all of us would have liked. Now, honestly speaking, very few people care about the clean and green aspect as much as the cost that this can reduce. There are 4 large cold start problems, which are actually a challenge. One important thing is that, of course, the vehicles are not available, then component manufacturers don't exist, and because the vehicles don't exist, so there's a cold start problem there. The other problem is that the charging infrastructure, which some of our companies are trying to solve, doesn't exist, and therefore, you don't see good vehicles on the road, and also financing options is another problem. But if all of this gets done, the important thing that you'll realize is that electric vehicle is a fundamental innovation. As much as all of us may like to imagine, it is not simply a new powertrain. Putting a battery and replacing the engine, it is not as simple as that. There are so many changes, and it changes the entire ecosystem. Just to give you an idea, it's a $300 billion industry, which is going to get impacted over the next 5 to 10 years and creates a fabulous opportunities for entrepreneurs, people who are out of startups already and are thinking of new ideas. They should probably think about it. So yes, we began talking, and Venkatesh and I went around and understood a lot of things. We are coming up with a massive report about what we learned, and hopefully you will get to answer some of the questions that you didn't know who to ask. Venkatesh? So this is just a sample slide of some of the work we are doing. So like Arpit mentioned, we are planning to release the primer on 4th of April. And as you can see, we are projecting that the EV market, at least on the OEM side, is going to cross 30 billion at least by 2030. And let us actually look at more of the impact that is already being created by some of the companies we have invested in. So this is a video. मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं 2014 से गाड़ी चलाना स्टार्ट करा था। 2014 में मैं ऑटो से स्टार्ट करा था। तो सुबह 6 बजे से लेके रात को 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाते थे। ऑटो चलाता था, जिसमें 1500 से 1600 रुपये की इनकम होती थी, जिसमें से 450 रुपये ठेकेदार को देना होता था। ऑटो जो मैं चलाता था वो सीएनजी का था। उसमें सीएनजी डलवाने पड़ते थे 150-200 रुपये का प्रतिदिन। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी ली है। मैं खुद चार्ज करता हूँ यहीं पे। अपना पूरा सेटअप लगवा रखा है। 3 से 4 यूनिट आता है एक दिन का। 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, जिससे मैं पूरे दिन घूमता रहता हूँ। 40-50% ख़त्म होते हैं, उतने में यहाँ आ जाती है अपना काम पूरा करके। काम है, सुबह 10 बजे जाता हूँ। कोरियर कंपनी में गाड़ी लगी हुई है। पार्सल छोटे मोटे एरियो का ही होता है।
4-5 घंटे में काम नहीं पड़ जाता है। गाड़ी लेने के बाद यह है कि इसमें ठेकेदार को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, गाड़ी मेरी खुद की है। अब अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आती है। ये गाड़ी लेने के बाद अब मैं खुद का मालिक हूँ। गाड़ी में सबसे अच्छा ये लगा सर, इसमें आवाज़ नहीं आती है, लुकिंग भी अच्छी है और ये CNG वालों से बढ़िया लुक है। पिकअप बढ़िया है, ले लेती है, आप चढ़ जाती है अपना। बोलते हैं गाड़ी सही है, आगे चल के 1-2 और लेंगे, बढ़िया गाड़ी है। So what you actually saw was the kind of impact that is being created by Euler. Next up is a video which talks about how a e-rickshaw driver is actually able to earn more and send their kids to school and enable them to get better education. जो भी है रिक्शे का ड्राइवर बन चुका हूँ। गांव में मेरे बीवी घर में सिलाई का काम करते हैं, 2 बच्चे हैं। अब बच्चे को मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ भविष्य में पढ़ ले, अपने दिमाग लगा के लगन से अपना 2 पैसे बचा लेंगे, वही पैसा भेज देंगे। ये तो 1 मिनट लगता है, अपना वो ID नंबर होता है, वो ID नंबर से स्कैन करके 1 मिनट बैटरी का लगाओ, चलो। मेरे पास बैटरी का अवेलेबल है स्मार्ट का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। काम जब रहेगी तो मैं काट पीट के 1000 रुपया कहीं नहीं सर। मेरे इतना हिम्मत है कि अपने बच्चे को जहाँ तक होगी पढ़ाई कराए। Next up is a video which talks about how YOLO is actually bringing more women into the labor force by giving them a tool which never actually existed. मेरा नाम प्रियंका सिल, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं बेंगलुरु पे 1 साल से हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आई मेरे फैमिली के साथ, मुझे काम चाहिए था मेरे फैमिली को हेल्प करने के लिए। तो तब कोई काम नहीं मिल रहा था, लॉकडाउन की वजह से सभी बंद थे। तो मैं सोचा मतलब दूसरा कोई, मैं देख रही थी कि स्विगी में ज़ोमैटो में काम कर रहे लोग, तो मैं भी ज्वाइन करने के लिए सोची। तो उधर गई तो वो लोग बोला मुझे DL की ज़रूरत है, फिर बाइक की ज़रूरत है। तो मेरे पास बाइक भी नहीं था, DL भी नहीं था, पैसा भी नहीं था उतना। तो मैं सोचा दूसरे कोई तरीके से ज्वाइन करूं। फिर देखा योलो बाइक में सभी कर रहे हैं, एक फ़िक्स रेट है इसमें। फ़िक्स रेट में मैं पूरा वीकली 24 आवर्स मैं चला सकती हूँ उसको। मुझे पेट्रोल का या दूसरा कुछ पैसा एक्स्ट्रा भरना नहीं पड़ेगा। इसका जो बैटरी है, बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बैटरी लो हो जाए तो मैं जाके चेंज करा सकती हूँ। ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब ये बैठने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। इसमें बैग रखने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, स्पेस है पीछे में, ये फ़ोन रखने के लिए स्पेस है इसमें, मतलब चलाने के लिए कंफर्टेबल है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं इसमें से पैसा कमा लेती हूँ, मेरे घर में थोड़ा हेल्प हो जाता है। अभी मुझे किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ता, उल्टा मैं मेरे घर वालों को हेल्प करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें काम करके। और थैंक यू योलो। So yeah, our EV Prime is going to hit all of you on 4th April, so watch out for that. Thank you.